Hello students, in this class of Slate Physics we will continue with the chapter of light and in this class we will study refraction of light. ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था. नाउ दिस इज द अदर फिनोमेना विच इज एसोसिएटेड विद लाइट एंड दिस इज refraction of light, right? So according to your syllabus says that define and use the terms normal, angle of incidence एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अच्छा जरा गौर कीजिएगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस टाइम, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो रिफ्लेक्शन के साथ एसोसिएटेड था, राइट? बट दिस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ बिट डिफरेंट एंड दिस इज एसोसिएटेड विद फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन में हमने एक और चीज देखी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी सेम नहीं होगा. दीज आर ऑल द थिंग्स जिसको आगे जाके हमने डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, सो द सेकंड पॉइंट ऑफ सिलेबस इज डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिकॉल एंड यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, आगे जाके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन भी करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन टोटल जो है वो 4 फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में. ठीक है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ट्रांसपेरेंट ब्लॉक एंड डिफरेंट शेप्स. ठीक है, सो बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन और फिर इस एक्सपेरिमेंट को भी डिफाइन करेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस डायग्राम, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे आपको लगेगा कि ये जो स्ट्रॉ है दिस इज अ ब्रोकन स्ट्रॉ. सो दिस पिक्चर कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन कि बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन. इज दिस स्ट्रॉ एक्चुअली ब्रोकन? क्या ये असल में ब्रोकन स्ट्रॉ है बच्चों? नहीं, दिस इज नॉट ब्रोकन स्ट्रॉ. रादर जब लाइट कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द वाटर, ठीक है, जब वाटर से बाहर आ रही है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. लाइट कमिंग आउट ऑफ वाटर इज बेंडेड एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. अगर आप इस स्ट्रॉ को पानी से रिमूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉ एक फुल कंप्लीट स्ट्रॉ है. दिस इज नॉट अ ब्रोकन स्ट्रॉ. सो दिस इज वंस अगेन जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, राइट? सो स्टार्टिंग off, before starting the phenomena of refraction, we have to understand certain terminologies, and first one is speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum. So speed of light in vacuum is represented by symbol c and its value is 3.0 multiplied by 10 raised to power 8 meters per second. Speed of light does not change its value in vacuum. This value is constant and you have to memorize this value. Right? So speed of light in vacuum is 3 into 10 raised power 8 meters per second, which is 300 million meters per second. This is a large value. ठीक है, इसी वजह से जो सन से है वो लाइट अर्थ को बड़ी जल्दी रीच कर जाती है at speed of 3 into 10 raised power 8 meters per second. It takes approximately 8 minutes to reach the surface of Earth. अच्छा, आप लोग लिख रहे हैं, शाबाश. Speed of light reduces in denser medium, in denser optical medium. ठीक है, now what is optical medium? All those mediums through which light can travel. ठीक है, हम इनको क्लियर मीडियम भी कहते हैं, हम इन्हें ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर इज ऑप्टिकल मीडियम, डायमंड इज अ क्लियर सॉलिड, ठीक है, ग्लास इज अ क्लियर सॉलिड. सो ऑल दोज मीडियम्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल मीडियम. ठीक है, सो जो मीडियम जितना डेंस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम हो जाएगी. सो बेसिकली मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? वैक्यूम में. So this value of speed of light in vacuum is maximum because vacuum से हर चीज dense ही होती है. हाँ,
हम एयर में कंसिडर करते हैं कि वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली सेम बिकॉज एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो हम एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इतनी ही कंसिडर करते हैं जो कि वैक्यूम में होती है, एंड दिस वैल्यू इज 3 into 10 raised power 8 meters per second, right? Now what is optical medium? Optical medium is all the mediums, ठीक है, through which light can pass through or light can travel through। ये सारे के सारे मीडियम जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, ऑल दोज मीडियम्स आर क्लियर मीडियम। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, डायमंड, लेट्स राइट अनदर एग्जांपल ग्लास, ठीक है। ग्लास भी जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ग्लास विंडो है यू कैन सी थ्रू इट। व्हाई यू कैन सी थ्रू ग्लास विंडो? आप वॉल के थ्रू तो नहीं देख सकते, बट यू कैन सी थ्रू ग्लास विंडो बिकॉज ग्लास विंडो इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज एन ऑप्टिकल मीडियम। सो ऑल दोज मीडियम्स विच आर डेंसर, ये डेंस मीडियम की कैटेगरी में आएंगे इफ वी आर कंपेयरिंग देम विद वैक्यूम और विद एयर। सो इनमें स्पीड ऑफ लाइट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v and this will be less than c। and what is c? Speed of light in vacuum, which is 3 into 10 raised power 8 meters per second। जो velocity in medium होगी, ठीक है, और c is velocity in vacuum, you have to memorize that c is always greater than velocity in medium, right? Now we have to define a term referred as refractive index। refractive index, so this term is related to all the optical media। so हर optical medium की refractive index different होती है because उसके अंदर speed of light की value different होती है। so defining refractive index, आप लोग लिख रहे हैं, शाबाश। refractive index of a medium, so this is a term associated with a medium। हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होती है और उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। let's write the formula of refractive index। refractive index is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium, ठीक है। speed of light in vacuum is represented by symbol c and speed of light in that medium is represented by symbol v। so refractive index is equal to c divided by v, right? so this is the formula of refractive index। what will be the unit of refractive index? बच्चों देखे शाबाश, it is a ratio of velocities। c is velocity या speed of light in vacuum, v is velocity of light in that medium। तो velocity का unit velocity के unit से cancel out हो जाएगा, so it is a unitless quantity। it is a unitless quantity, ठीक है। अच्छा, the value of speed of light in any medium is always less than speed of light in vacuum। so as c is always greater than v, the value of refractive index n is always greater than 1 बच्चों।
इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी बिकॉज न्यूमिनेटर हमेशा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन. Speed of light in glass, in certain type of glass, is equal to 2 into 10 raised to power 8 meters per second. देखिए बच्चों, this value is less than speed of light in vacuum. और हर dense medium में speed of light जो है वो reduce होगी. Find out refractive index. Find refractive index of glass. So simply we will apply this formula. N is equal to C over V. Now what is C? C is speed of light in vacuum and V is speed of light in glass. We will substitute the values. Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meters per second and speed of light in glass is 2 into 10 raised to power 8 meters per second. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.5. याद रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे. सो सर्टेन टाइप ऑफ ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. सो कीप इन माइंड कि दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आगे आने वाले पार्ट में वी विल सी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज 3 मोर फॉर्मूलाज. ठीक है. नाउ यू विल राइट अ स्टेटमेंट. एज लाइट मूव्स या ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम, it bends towards the normal. ठीक है. याद रखिएगा जब भी लाइट रेयर मीडियम कहते हैं लेस डेंस मीडियम को, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. इसने नॉर्मल की तरफ आना है. मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूं. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन एयर एंड ग्लास. ठीक है. टॉप वाला मीडियम इज एयर. Air has comparatively lesser density. It is considered as rare medium. ठीक है. And this medium is glass which has refractive index of 1.5. ठीक है. This will be considered as denser medium. So firstly we will draw a line, जैसा कि हमने reflection में भी line draw की थी, a line which is at an angle of 90 degree with the reflecting surface. What was the name of this line? This line is called normal, right? So a line which makes an angle of 90 degree with the surface, this line is referred as normal. ठीक है. So यहां पर मैं एक ray draw कर रहा हूं which is hitting the surface of glass at an angle of 45 degrees. So this is incident ray. I am writing it as incident ray. So this is angle of incidence and this is equal to 45 degrees. ठीक है. So according to this statement, as light moves in the denser medium, it bends towards normal. तो याद रखिएगा कि लाइट ने इनवर्ड्स बेंड होना है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना है. So definitely angle of refraction is this angle between the incident ray and the refracted ray. This angle would be less than angle of incidence. Angle of incidence is greater than angle of refraction when the light is moving from rare medium to comparatively dense medium. So how can you find out the angle of refraction? For that we will see the second formula of refractive index, and the second formula of refractive index is refractive index is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. ठीक है. This is the second formula of refractive index. You have to memorize this formula also. Let's substitute the values in this formula. What is value of refractive index of glass?
The value of refractive index of glass is 1.5. So 1.5 is equal to sine 45 divided by sine of angle of refraction. ठीक है? Sine of angle of refraction is equal to sine 45 divided by 1.5 और साइन इनवर्स से आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्टली sin 45 divided by 1.5 is coming out to be 0.471 and sine inverse of this value is 28 degrees. 28 degrees. ठीक है? So now we will draw the angle of refraction as 28 degrees. So here is your angle of refraction. This is refracted ray. ठीक है? And this is angle of refraction and its value is 28 degrees. Right? So here you have a second formula of refractive index, that refractive index is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. This is the formula in case the light ray is entering from rare medium to dense medium. और याद रखिएगा रे टू डेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज लाइट तो बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल. इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम ही होना है. ओके, विच एंगल इज ग्रेटर इन द न्यूमिनेटर में ग्रेटर एंगल है या स्मॉलर एंगल है? न्यूमिनेटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज ग्रेटर और डिनोमिनेटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है विच इज स्मॉलर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो ग्रेटर एंगल होगा वो हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा. Greater angle is always in the numerator. So let's also write the formula if the rays are entering from dense to rare medium. ठीक है, याद रखिए जब लाइट डेंस टू रेयर मीडियम में मूव करेगी सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. So in this case, angle of refraction will be greater than angle of incidence. Now we can write the third formula of refractive index. First formula was in terms of speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium. The second formula is for the light moving from rare medium to dense medium. This is sin I over sin R, and now the light is moving from dense medium to rare medium. अच्छा, अब इसका एंगल क्या होगा? याद रखिए एक सिंपल सी टिप है, जो ग्रेटर एंगल होगा दैट विल बी इन द न्यूमिनेटर. सो ग्रेटर एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस टाइम. नाउ यू कैन इजीली प्रेडिक्ट दिस फॉर्मूला. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फोर्थ फॉर्मूला भी है और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा. ठीक है, फॉर नाउ मैं आपके सामने एक डायग्राम प्लेस कर रहा हूं. सो हियर वी हैव अ ब्लॉक ऑफ ग्लास. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ ग्लास एंड दिस ब्लॉक ऑफ ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की थी वही आप यूज कर लें, 1.5. बाहर वाला जो मटेरियल है दैट इज एयर. एयर इज कंसिडर्ड एज रेयर मीडियम बिकॉज इट इज लेस डेंस एज कंपेयर टू ग्लास. सो ग्लास इज कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली डेंस मीडियम. ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग अ डॉटेड लाइन एट द surface ऑफ ग्लास. व्हाट डू यू कॉल दिस डॉटेड लाइन? You call this line a normal. ठीक है, here I am introducing a ray and this ray is incident ray and it is approaching the surface of liquid at angle of incidence of 50 degrees. So this is incident ray. Incident ray is coming at an angle of incidence of 50 degrees. What will be the value of angle of refraction?
You know the formula. What is the formula if the ray is coming from rare to dense medium? G. We have just discussed that in this case, formula of n is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. In this particular case, the value of refractive index is 1.5, angle of incidence is 50 degrees, and we have to find out the value of angle of refraction. Substitute करें, refractive index is 1.5, sine of angle of incidence is sine of 50 divided by sine r. Sine r is equal to sine 50 divided by 1.5. So calculate करें शाबाश इसकी value. Sine 50 divided by 1.5 is 0.510 and sine inverse of this value is 30.7. So angle of refraction is coming out to be 30.7. मैं जब ड्रॉ करूंगा तो मैं इस एंगल को ड्रॉ करूंगा बच्चों 31 डिग्रीज, राइट. सो पिकिंग अप द रूलर, आई एम ड्रॉइंग एन एंगल ऑफ refraction of 31 degrees. सो मैं रूलर को इस पोजीशन में एडजस्ट कर रहा हूं कि ये एंगल एग्जैक्टली 31 हो जाए. ऊपर वाला एंगल जो है इस वक्त 59 है और जो लोअर एंगल है दैट इज 31 डिग्रीज. सो दिस रे इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टेड रे, द बेंडेड रे. ठीक है. Or once again you can see that when the ray is entering from rare medium to dense medium, it is bending towards normal, right? So this is angle of refraction and its value is 30.7 degrees. हर रे के ऊपर आपने एरो जरूर ड्रॉ करना है. दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस रे. ठीक है. मूविंग ऑन. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस रे ऑफ लाइट विल इमर्ज आउट? This is glass, this is comparatively denser medium, and this time the ray is coming back to air and this is rare medium. So, जब ray इस point पर enter हो रही है, this is a situation when the ray is entering from rare to the dense medium because air is rare, glass is dense. और नीचे वाले point पर situation है, air is entering from dense to rare medium. शाबाश. Right? So here we will draw a normal at point of incidence once again. So जितने बार भी रे जो है ये इस पॉइंट पर इंसिडेंस होगी, इस पॉइंट पर आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो जो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो नेक्स्ट पॉइंट पर, वो एग्जिट पॉइंट पर, दैट विल बिकम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. So this time this is angle of incidence when ray is leaving out. ठीक है. अब जब रे बाहर आएगी, एयर में आएगी, that angle would be angle of refraction and this time ray is coming from dense to rare medium. Right? किस साइड पर बेंड होगी? Now it is going to bend away from normal. And in this case, the formula of refractive index would be n is equal to sine r over sine I, because I just told you the greater angle is always in the numerator. ठीक है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. n is 1.5. You have to find the value of angle of refraction and the angle of incidence is 30.7. Right? Find out the value of angle of refraction. Sine of 30.7 multiplied by 1.5 and sine inverse of this value, this is coming out to be exactly 50 degrees. Right? So, अब जरा देखें, जिस एंगल पे रे एंटर हुई थी that angle was 50 degrees और जो हमने एंगल कैलकुलेट किया वो भी exactly 50 डिग्रीज है. इसका मतलब है कि जब रे दोबारा से एयर में जाएगी उसका एंगल दोबारा से वही वाला हो जाएगा जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, विच इज दिस 50 डिग्रीज. सो इन दिस केस द रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बेंड वंस अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज. याद रहे
you have to measure, you have to draw all the angles with respect to this normal. So this is refracted ray and this is angle of refraction of 50 degrees, right? Now, one thing you have to note, what will happen to the ray of light if it is coming along this dotted line, which is at an angle of 90 degree, and you call this line a normal line. ठीक है, बच्चों याद रखिए जब भी रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल लाइन के अलोंग आएगी इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी. देखिए शाबाश, दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस विल गो अनडेविएटेड. इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, दिस इज अनडेविएटेड. So whenever the ray of light comes along the normal, मतलब perpendicular to the surface of glass or any medium, there is no change in its direction. It will always go undeviated. So we have seen refraction thoroughly in this video. Refraction का जो next phenomena इससे associated है, that is when the ray is coming from dense medium to rare medium. And in this situation, the ray of light is completely reflected back into the medium, and that situation is called total internal reflection. But we will see total internal reflection in the next video, and that is very important topic. So for that, stay tuned. Thank you.